Namaste and welcome to everyone. We are EXP India is presentation factors and aspects so we can get maximum of the deals. And today we will be talking about the open house and the viewing. Why it is so important. So a little brief about myself. My name is Rahul Chadha and I'm in real estate business for last 15 years and I'm specialized in luxury market in South Delhi. So normally our ticket size starts like from 5 CR, it goes, and if it goes and all, it goes even 100 CR or something. And handle all the portfolios of our clients also. And we are like in South Delhi, we take mandates, do open houses, and all the commercial, residential, and all. This is about me, and so now the main agenda of today, that why and the open house is important. To understand the fundamentals about the open house and why it is important is that when we take invite people, when we invite people, so the interaction share the same vibe, we understand their requirement more in detail, which helps us to get the exact which we get the more understanding of the requirement, which helps us to give the more information about the requirement in detail. And so we are talking about the preparation today. So about the open house and the property showing, if we talk about the property showing, so property showing is the way and show the exact house, like what your buyer actually, क्या आपका exactly buyer देख रहा है, क्या उसकी exactly requirement है, उसको समझने के लिए उनके साथ जरूरी है कि अगर 3 BHK बोल रहा है, 4 BHK बोल रहा है, अगर उसका 3 BHK का उसके माइंड में क्या साइजेस हैं बेडरूम्स के, और आपके माइंड में क्या उसकी फर्स्ट कन्वर्सेशन होती है, कॉल पे कन्वर्सेशन होती है, तो उस पर क्या उसकी आपकी क्या कहते हैं, उनके साथ आपके माइंड में उसकी डिटेल अलग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी अलग चलेगी, आपकी माइंड में रिक्वायरमेंट डिफरेंट चलती है. तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उससे मिलें. एक बार मिलेंगे आप उसको, जब 3-4 प्रॉपर्टीज या दो प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज आप दिखाते हैं, और व्हाट आई आल्सो डू नॉर्मली बी लाइक आई प्रेफर कि एक बार हम आई प्रेफर टू द क्लाइंट कि वे मिलें, एंड वी आफ्टर दैट वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड सिट ऑन दैट एंड टॉक अबाउट दैट प्रॉपर्टी, उसके फैमिली के साइज के बारे में, अभी करंटली वो कहाँ रह रहे हैं. दैट एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या वो करंटली अभी कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका फैमिली साइज है. दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कंसल्टेंट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो जिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, उनको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर पता नहीं होती है. वो आपको ही उसकी अंडरस्टैंड करनी होती है. उससे आप पूरे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कि अभी आप कहाँ रहते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कहाँ जाता है, उसके अभी उसके अगर ही ऑलरेडी मैरिड, तो उनका हस्बैंड वाइफ का वर्क प्लेस क्या है, एंड अगर ही हैव किड्स, सो कौन से स्कूल में जाते हैं. सो दीज थिंग्स इज लाइक यू कैन गेट ओनली आफ्टर शोइंग 2-3 प्रॉपर्टीज. तभी आप सारी चीजें पता चलेंगी. आप उससे पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उसकी प्रेफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी हाईलाइट्स उस प्रॉपर्टीज के आप दिखाने के लिए, ये सारी चीजें आपको तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. एक और चीज जो होती है, जब आप उस किसी प्रॉपर्टी के लिए आप दिखाते हैं उनको, तो उसकी आप लिस्ट जैसे करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट कि आप बिफोर शोइंग टू द क्लाइंट यू शुड नो व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉपर्टी, कैसे आप उसको रूट आपने फॉलो करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज उसको पसंद आएंगी नहीं आएंगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू हैव, और उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन जो उसने कुछ फीचर्स बताए हैं, उसके हिसाब से आपको उसकी प्रॉपर्टी के फीचर आपको पहले पता होना चाहिए. बायर को विजिट से पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन उस अपने नेबरहुड के बारे में, you should know each and everything before showing to the client. This homework is very important, like all pre-qualified and like
इंटरेस्टेड बायर्स जो होते हैं, प्री क्वालिफाइड जो इंटरेस्टेड बायर होते हैं, उनसे डिटेल में रिगार्डिंग देयर रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट द ओपन हाउस, so the open house is a public event which we do actually. We have done now, like last year we have done 2-3 times in Greater Clash, and one we have done in House Khas. So like the why this like open house normally not in India much, but people have started and we are actually doing and promoting it. So the beauty of this is like आसपास के जो नेबरहुड होता है, और आसपास के जो लोग होते हैं, वो आपको इंटरेक्शन का आपको चांस मिलता है उनके साथ. और normally we keep it like 2 days, like one for the all the brokers and all the channel partners, bankers and all, we invite them. Second day we invite the buyers, all are interested buyers. और वो जो भी एक दिन पहले जो हमने ओपन हाउस बाय चांस किसी आपके ही कोलीग के पास, किसी चैनल पार्टनर के पास देयर इज समवन रिलेटेड का कोई क्लाइंट होता है, so they call them there. What we normally see in like movies and all, in US में या जगह पे हाउस होते हैं, तो वहाँ पे have wine and cheese and cookies and milk and cookies and all. So when we have organized open house recently, it was a summer time actually, June or July. So we had fresh नींबू पानी and all. तो इससे ये चीजों से एक तो आसपास के लोगों को जो हमने इनवाइट किया, वी हैव गिवन देम अ लिटिल पर्सनल टच, एंड कि मतलब उनको प्रॉपर्टी भी दिखाई उन्होंने, हमें उसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स मिल गए, उनकी रिक्वायरमेंट पता चली, और few of the people were like planning to sell. So it's kind of you're organizing a place आपकी जहाँ पे इंटरेक्शन लोगों से होती है, और इंटरेक्शन होती है लोगों से आपकी, और आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपने अगर कोई मैंडेट लिया हुआ है, तो वो आप उसकी सबको, उतने लोगों को आप जितनों को दिखाओगे, आपको उसका फीडबैक पता चलता है. उसके हिसाब से आप जो रिक्वायरमेंट है उसकी, मे बी वो प्रॉपर्टी नहीं, बट सम अदर प्रॉपर्टी यू कैन propose to them. So these information is like this kind of activity of open house activity is very important, and this gives like very wonderful business also to you for future. Start थोड़ी मेरी presentation की अच्छी नहीं हुई है, but I just want to ask you like if someone wants to ask some question related to the property showing and open house. Anyone? Hi Rahul, good evening. Deep here. Hi Deep, how are you? All good, brother. Acha, I just want to check with you, what is the standard, or what is the basic average time duration for a mandate, for an exclusive mandate, and how confident are you that you're going to close it in this duration? See, normally we ask for 6 months, for duration of 6 months for the mandate, and Okay. people, like there are some people who we want to sell it as soon as possible, within like 3 months or 2 months, like that. But starting में जब मैंने भी starting में जब mandate लिया था, तो हम थोड़े से like we get थोड़ा लालची हो जाते हैं कि नहीं, हमें mandate तो मिल रहा है, any terms, किसी भी terms से आप mandate ले लो. But my suggestion is, whenever you go for a mandate, you should do the entire homework prior. What is the ongoing prices, क्या उसका, for example 6 CR is the price. Okay, ओनर को बोल के चलो कि भाई 6 CR का मार्केट में है, 5.75 अराउंड क्या कहते हैं, आई कैन डू, मतलब इतने के आसपास डील होएगी. लिस्टिंग चाहे मैं ज्यादा करूं, 6.5 करूं या समथिंग करूं, बट यू हैव टू like be very open. It's like because it's not a one day thing. It's a relationship जो कि आपकी 4 months, 5 months, 6 months आप उसको रेगुलर अपडेट दोगे, आप अपने बायर, जो भी आपका ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको रेगुलर अपडेट दोगे. तो दिस थिंग, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ जगह पे लाइक पीपल डू, हमने भी मतलब स्टार्टिंग एक बार ऐसा मैंडेट ले लिया कि आगे ओनर ने बोला कि मैं तो 10 मांग रहा हूँ, मार्केट व्हेन वी केम टू नो, और हमने थोड़ा चेक बाद में डिटेल में करा, तो 8 की हुआ है, तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा. उसका होना ना होना मैंडेट का बराबर है. So it's better to use
homework prior is very important. Yeah, it's happened with me also. Personally, I took a couple of exclusive mandates in Noida, and obviously, I wasn't that experienced in taking exclusive mandates and working upon it. Shashank also helped in that. But just trying to improvise कि इसमें कैसे हम better achieve कर सकते, तो open house is a very good strategy. Yeah. And आप जो आप ये कह रहे हो, जो costing आती है for staging a house and conducting an open house, this is part of the brokerage or this is brokerage? So this is over and above the brokerage. It's like a separate thing, which this activity we organize ourselves, and And the seller is bound to pay that कि वो brokerage में सारी include रहती है वो basically ये included आपके brokerage में already included होता है. brokerage में included रहती है. ठीक You है. have see when you use the name, when you representing a brand, so you demand accordingly. You can ask if अगर आपको लगता है, if you are confident, then you can sell it, and the property is good. That is also one of the property we faced the challenge. The property was not in a that much good condition. So हमने ले तो लिया था, but end of the day वो उसको हमें बहुत ही whitewash and also all these homeworks need to be done prior. Like whitewash should be done. Deep cleaning of the property is very important, because जब आपकी कोई property पे client will be visiting, someone will be visiting your property, so that should be presentable. If it's not presentable, there's no use of taking a mandate. Thank you so much. So, any other question? Yes, Rahul, I have a question. Yeah. So basically, as Deep asked you that, if the staging thing is already included in the brokerage, so how usually you tackle the situation brokerage with your clients? Because I think that's the most crucial thing. It is, Tarun, no doubt on that. That is the most crucial thing, and we have to be like we normally pitch for 2% and the taxes which comes with GST. But in some cases, the buyer or seller is actually very rigid. So we sometimes locks in like 1.5 or something, or even sometimes one of the mandate I recently signed even for one. So these things, these challenges you will going to face, because market is very unorganized, and but I'm telling you, when you represent and you when you do two or three kind of mandates yourself, so at that time when you pitch to them that like this is my fees, yes or no, you will get very confident. You know that what kind of efforts are there. You would have to do the marketing also. You have to do open house also. So then you will be very much confirm in your mind that yes, I have to charge this much. Otherwise, you can charge the marketing fees also with the and marketing fees can be very, like, even you can charge 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs, depending to your expenses. But you have to show the expenses to the seller. It should be visible to them. Right. So obviously, take the limit also. Like 2 lakh is the limit. I will be spending this much. I will, and it will be, the billing will be with your name. Like you can tell the seller. Makes sense. Yeah. So basically, what is your strategy when you prepare any kind of the buyer presentation, or sorry, the seller presentation, when you're going and get these mandates, and also do you walk them through what exact the services you will be providing them, right? Because I believe you do that, and this could help all the agents know that how they can leverage that thing which you are already using. So we actually give them, brief of the colony and all, and the neighborhood normally owners have, but we give them the transaction is going on. How's the market? Is it the buyer market? Is the seller market? What will be the target price? Will be the our target price? Go through what will be the listing price. So as I mentioned earlier, also, so these things are very important, because without, if you go and take like mandate without any homework, so it will be of no use. आप उसको mandate आपको मिल भी जाएगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा जब आपने उसको ओवर द मार्केट से ले लिया. बिकॉज एक लोगों के माइंड में ना एक मैंडेट का और जो एक वो है कि अगर मैंडेट अगर हम दे रहे हैं तो इट इज लाइक लाइक हम दैट सेलर इज डूइंग फेवर टू अस. तो वो क्या करते हैं कि अगर आपको मैंडेट लेना है तो इंस्टेड ऑफ 10 की प्रॉपर्टी तो आप 12 CR में बेचो. तो इट इज नॉट पॉसिबल. नो वन विल गोइंग टू
pay if you are a handsome or beautiful, or no one will going to pay 2 CR 3 CR extra to your seller because of that. आप जितना मर्जी अच्छे सेल्समैन हो, जितना मर्जी आप अच्छे हो, it will be very difficult to do that. Exactly. So homework is very important. Rahul, just one small question. अभी जैसे बात कर रही थी कि when we prepare the CMA for the seller, ठीक है? तो I know it's a very common thing in states or Western countries. But आप भी जानते हो इंडिया में most of the transactions are not transparent. ठीक है? यहाँ पे आपको पता है दो टाइप्स की इकोनॉमीज एंड दो टाइप की करेंसी. तो उस केस में the best we can do is present them with a briefing of what the properties are listed at in their vicinity. ठीक है? बट एक्चुअल में कई बार क्या होता है, कई डील्स होती हैं, और मैं पहले भी मैं काफी बार डिस्कस कर चुका कि कई डील्स होती हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स होते हैं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि हम उनको सिर्फ जो लिस्टिंग प्राइसेस हैं उसका ब्रीफिंग दें, या उसके हम 5 to 10% का अप डाउन का उनको लेवरेज. See, the closed door definitely होती है, but you normally कि आपको एक आइडिया तो होता है कि कितने पे होगा. बिल्कुल. See, for example, अगर मैं एक फिगर लेता हूँ 5, हमें लगता है कि 5 की हुई है, ठीक है, अंदर हो सकता है 4.90 की हुई हो, तो हम जो एक माइंड में लेके चलेंगे एवरेज, वो इतने उसको इतना डीपली अगर हम उसकी लाइक एवरेज, वो डेफिनेटली इट विल बी नॉट गुड. ये parts of the world it is very clear, transaction is very open and everything, but here in South Delhi what I can see, and even in Gurgaon, you are very much active in Gurgaon, people are these days doing maximum check, full check deals actually. I recently also, whatever the mandates I have, so like ek mein to matlab we normally don't promote mix or something, but it was a full check transaction. Yeah. So that is at the end of the day, we need an idea. And Rahul, just to support you here, and Hi, Sriram. hi Rahul. So one thing, I think people give you mandate because you are trustworthy, and they have a hope that you will get a neat and clean deal. I think this is why people give you the mandate also. They don't want to get into the hassle. So I have seen in my experience, I think they wanted to do this thing, and that's why they are quite of comfortable giving the mandate. The people who wanted to deal in all these cash and all, so they will feel hesitate on the first hand itself that they don't want to deal. So that's not your client. So again, I always repeat, instead of working in the market like Rahul said, you need to choose your client wisely, because at the end of the day, they will pay you, and if you are working with the right-minded people, the chances of getting successful is much higher. Right. And like Rahul said again, because I've seen in grow also like in taking mandates, because I remember when we started 4.5 year back, 4.5 year back, Rahul was like, भाई शशांक भाई कैसे mandate दे देंगे लोग, क्यों दे देंगे हमें mandate. तो फिर I think over the period of time he also learned this art, and now he is more comfortable going what to talk, what not to talk, right? And I think it is just as I said, rocket science नहीं है, but practice है. जितना practice करोगे, it's an art, फिर आपकी बेटर ही होती जाएगी. तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, एंड लाइक राहुल सेड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्लाइंट ओनली. से बात भी करते हो, डू योर होमवर्क तो होना चाहिए. सबसे पहले तो आपकी नॉलेज ही आएगी वहाँ पे. वो आप जब क्लाइंट के सामने जाओगे, लेट हिम स्पीक, आस्क सम राइट क्वेश्चंस, ही विल टॉक एवरीथिंग अबाउट. So instead of you asking them, you giving them ज्ञान, मतलब what we have seen in the first meeting, people will start giving ज्ञान as a broker. ठीक है. So सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझो तो सही, वो चाहता क्या है, क्यों बेचना चाहता है. You should ask this question, why you want to sell. This should be the first question, right? And how soon you want to sell. Third, have you planned anything, कि आपने ऑलरेडी कुछ खरीदा हुआ है या फिर रिलोकेट कर रहे हो. तो वो क्वेश्चंस आते, देन यू ओपन अप एंड देन यू कैन आस्क देम. तो मैं कल आई थिंक किसी को बता रहा था 45, आज सुबह ही मैंने शायद बताया था, 45 मिनट्स मेरा डिस्कशन हुआ था. ये लास्ट में क्लाइंट ही पूछता है, सर आपकी सारी बात आप बोलो ही मत, हमारी टर्म्स क्या है. और जब क्लाइंट कि मतलब आपका जो कॉन्वर्सेशन है एक सही ढंग से जा रही है, तो वो ज़्यादा है. या फिर वो बोलेगा यार जीएसटी कौन देता है, या कौन चार्ज करता है, सब 1% चार्ज करते हैं, तो उसको बोलो सर भी लेना पड़ेगा. आई थिंक राहुल हैज ऑलरेडी सीन सम ऑफ द मैंडेट्स. आई थिंक 99% ऑफ द मैंडेट 2% जीएसटी में. फिर से बोलता हूं, मैंने अपनी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची जिसमें 2% जीएसटी. So I completely agree with Shang, and we have gone to number of the meetings, and in starting I was actually not so confident about the mandates and all, but with the time, and you while you're meeting, you have to add value, you have to
you don't have to be yourself. You have to be like you are an EXP. You're not Rahul, you're not Deep, you're not Shashank. You are EXP. You have to be that much confident. अगर बोलते हैं कि 2% कौन देता है, GST कौन देता है, कहते हैं हम लेते हैं, we charge. So you have to be this much confident. And once you add value to your talks and what information you have, इससे जो seller है, even buyer, then understand that this guy is not like a regular consultant कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर लिया. See, these things matter a lot, like when you're checking his documentation, all his all the utilities, is it like up to date or not, the taxes and everything. So when you have these knowledge, तो ये एक बहुत बड़ा factor होता है, to add value to it. जब तक उसको लगेगा नहीं कि भाई मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं थी, I have to hire another person, तो अगर यही मेरी सारी चीजें हैंडल कर रहा है, so it's a benefit to, it's a plus for him. So ये सारी चीजें बहुत ही important है. और trust, definitely you have to give him references, you have to give him you have to show, or be a, like, for selling, I personally believe you have to be a good listener, because we have done number of deals in which, like, we meet buyers like हम तो 1 साल से देख रहे हैं, आप क्या, और हम 2 साल से देख रहे हैं, हमें कुछ पसंद ही नहीं आया. एंड ट्रस्ट मी, इन 1 or 2 विजिट्स, जब वो, अगर आपको कोई ऐसे बोले नॉर्मली कि अगर हम तो 2 साल से घर ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोई आज तक समझ ही नहीं आया, हम आप देख लेते हैं कि आप क्या दिला दोगे, like that kind of a challenge to you. So in that case, you don't have to show a property to him or to her. You have to listen her कि what exactly she or he is looking for. उस केस में आप, मतलब, I can even share your experience. So that lady was looking for a house for like 2.5 years something. मैंने उनसे पूछा कि आप रहते कहाँ हो, where you stay? So she mentioned she stays in a civil lines colony in Delhi. So I understood that she loves greenery. She's more like she have a green finger. इनको greenery आसपास होगी, then only she's going to like the property. And I have shown her only one property to her in Panchil Enclave. It was corner facing to the green garden and all. And I told her that only I'm going to show you one property because you already seen number of properties in South Delhi. I'm not going to waste your time and my time. She came like in 7 o'clock at 7 in the evening. She liked the property. Next day again she came in morning to have this look at the same property, and she finalized it in one visit. And उनका जब वही again जब the time of the brokerage कहती, people have spent it and shown me 30 of the properties, and you showed me one property and I liked it. I don't know how to justify your brokerage. So then this is my beauty, this is my art, that requirement, and I delivered what exactly you want. So coming back to the presentation. So Great, thank you. Yeah, importance of the showing and the open house. So the build buyer interest. So buyer is like coming like to the buyer side. Interest जो है ना, आपको, you have to understand what exactly he wants. Once you understand what exactly he wants, you will be like putting a filter to it कि उसको कौन सी प्रॉपर्टीज आपको समझ आएंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज उसको समझ नहीं आएंगी. If she or he wants a wide road or a green or a more of car parking, they need more of car parking area. So उसके जो highlights हैं उनकी, वो आपको उनकी बातें सुन के आएंगे. आप अगर उनको दिखाते रहोगे प्रॉपर्टीज, वो इतना नहीं आएगा. उसको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व. आई नॉर्मली डू like 2 or 3 visits में मैं समझ जा, मतलब I try to understand कि what exactly they are looking for, or what kind of expression they are making when they enter the property. Are they happy? Are they comfortable or not? Are they like want to say something? उनको रीड करना is the most important thing. अगर उनको आप रीड नहीं कर पाते तो कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, आपको इसमें क्या, और आपको ऐसा लगता है कि अगर इसमें वो एड ऑन होता तो वो आपको चीज आप फाइनलाइज करते. So you have to ask these questions with the buyer. Jules. So sorry for the. So the next thing is the exposure, like attract the wide range of the potential buyers. जितने ज्यादा लोगों को, buyers को आप attract करने के लिए, there are number of like things, like when open house is one of the thing.
Okay, doing marketing is the another thing. You can make reels. We do reels also for the South Delhi market, and explaining what exactly people are looking, what their requirement. If some new listing comes up, you can make a reel, or even you can make a like a video and post it on your WhatsApp status. See, everything is marketing. Marketing का छोटा सा एक मतलब है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके पास है कुछ ये चीज, और वो अवेलेबल है सेल के लिए। या जो कोई चीज आपने जैसे मैंडेट लिया तो उसको आपको मार्केट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लेके रख दिया और आपने सी लेटर भी साइन करा लिया, अपनी 1% 2% मार्केटिंग फीस सब कुछ कर लिया, लेकिन आप उसको अगर मार्केट नहीं कर रहे, लोगों को पता नहीं चल रहा कि भाई ये चीज भी अवेलेबल है, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो इसलिए मार्केटिंग and increasing the exposure is very important. And the third point is here is like a like a urgency. Create an urgency. So urgency create करने के there are number of ways कि आप सबसे बेस्ट जो होता है, लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी कोई और ले जाएगा या मेरे पास भी, इट अकॉर्डिंग टू मी इट गिव्स अ लिटिल नेगेटिव फील टू दी बायर, जिसमें आपने इतना उस पर इन्वेस्ट किया होता है, टाइम एंड एफर्ट्स सब कुछ, तो उसको लगेगा वो कर रहा है, पुश कर रहा है जान से। तो हमें पुश ऐसे करना है कि उसको फील भी ना हो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज लुकिंग फॉर हाउस एंड उसको लाइक उसके घर में शादी है, या उनके बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और समथिंग, सो आप उनकी ही चीजें, जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे लोगे या जो उनसे सुनोगे, बातें करोगे, उनके साथ बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, उन्हीं चीजों को ही आप यूज कर सकते हो। बट ऐसे यूज नहीं करना कि उनको लगे कि जो ये तो फायदा उठा रहा है। यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन दिस। ओके, any question related to this, please? So Rahul, I'm just trying to understand. Seller mandate तो चलो ठीक है लेना, एक तरह से हम strategy build है. How do you plan on taking buyer mandates? See, buyer mandate is again like if you have already dealt with that person, he knows you are who you understand your the buyer's requirement. वो रेफरल केसेस में ज्यादा मिलता है, डेफिनेटली थोड़ा कम मिलता है। बट अगर आपने जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी डील करी हुई है, आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करी, जैसे ओपन हाउस मतलब मैंडेट लेके उसकी कोई प्रॉपर्टी सेल करी आपने, फर्दर एवरीवन, नो वन गोइंग टू पार्क हिज मनी इन बैंक और समथिंग, ही विल गोइंग टू बाय, शी विल गोइंग टू इन्वेस्ट, तो उस केसेस में आपको बायर मैंडेट भी मिलता है। Okay, because in seller mandates we have the option of telling the seller that this is the services, these are the services that we're going to provide you. Along जैसे लिस्टिंग होती है, स्टेजिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। बायर को हमें बेसिकली ये होना पड़ता है कि आपकी प्रेफरेंसेस एंड आपके जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से हम आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। राइट। सो उस बेसिस पे यू आर सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रस्ट फैक्टर हैज टू बी देयर, ओनली देन we have to push for the mandate. Yes. Okay. See, mandate is something, someone is authorizing you. He knows that this person is like, he knows me. He understands my what exactly I want in sale also, in buying also. So mandate is something, आपको एक तरह से what we call the portfolio manager जैसे होते हैं, तो उस तरीके से we are the person जिसमें वो real estate में they are authorizing us कि आप इस चीज को मैनेज करो, आप इस चीज को देखो, वी आर ओके वट एवर यू डू, वट एवर यू, आपका हमारा चीज समझ गए हो। और डेफिनेटली जिस तरीके से सेलर में आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हो ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर, जब आप बाइंग का आपके पास मैंडेट है या बाइंग का आपको कोई ऑथराइज कर देते कि आप मेरे बिहाफ पे देखो, तो खुद विजिट करते हो, यू फील लाइक दिस इज द पर्सन गोइंग टू लाइक, आप शॉर्टलिस्ट करते हो, शॉर्टलिस्ट के हिसाब से आप उसको आगे दिखाते हो। सो दिस इज द activity for in both the cases. So yeah, moving to the next slide. So the preparation for successful showing and the open house, this is the most important slide and most important thing for every agent to obtain the seller permission to get the written concern, like to how to get the mandate and documentation, uske liye it's related to that. Photograph, we have to get the photographs ready when you take the mandate. First thing is the property aapki should be clean, whitewashed. Second thing, you can click photos yourself. It's not something rocket science. Tutorials be available hain.
YouTube पे that how what is the best way to cover what's the best way to make the video of the house and everything. AI already enable है in EXP portal also. So every information is available online these days. Kind of excuse you can make कि भाई ये तो मुझे आता नहीं, ये तो बहुत महंगा होता है फोटो. We also do in South Delhi. If we don't get a photographer, we shoot ourselves. और उसको हम लोगों को पास जो भी हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग बायर्स हैं या ऑलरेडी किसी की हमारे पास आया हुआ रिक्वायरमेंट आई हुई है कि दैट दे आर लुकिंग फॉर, so we send them photos, we send them a little brief of the property, that this is the property we have, and this is the bedroom size, this much is the wide road, this is the floor. So this is very important. And उसके बाद होती है इज दी लीगल रिक्वायरमेंट. नॉर्मली अगर आप कभी कभी चेक नहीं करते हैं प्रॉपर्टी का टाइटल, खुद आपको नहीं पता, तो आप एक किसी ना किसी एडवोकेट से मैंडेट लेते समय आप उसको एक बार जरूर वेरीफाई करें, आप उसको एक बार अंडरस्टैंड जरूर करें, क्योंकि बाय एनी चांस आपने प्रॉपर्टी का पूरा कर लिया, आपने उसको पूरा किसी को दिखा पसंद भी करा दिया, ओपन हाउस हो गया, लास्ट में वी केम टू नो कि इसमें एक डॉक्यूमेंट इज मिसिंग और सम काइंड ऑफ ड्यूज आर देयर और समथिंग लाइक दैट. सो ये चीज का होमवर्क आपको मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मैंडेट और स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में आपको ये करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी एक्चुअली वन ऑफ द साकेत प्रॉपर्टी का हमारे पास मैंडेट, वी सोल्ड अवर प्रॉपर्टी इन साकेत. सो वहां पे हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें कम से कम अराउंड 2 to 3 months तो हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करने में हमारे टाइम लगा. द ओनर वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया, नो लिमिट्स कर दिया बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड द फैसिलिटीज वी हैव गिवन. यू नो कि आप जब तक अपना टाइटल ही ठीक नहीं करोगे तो इवन समवन विल कम टू बाय, तो आप उसको ट्रांसफर कैसे कर पाओगे प्रॉपर्टी. So this is very important. Like now is the prepare the property, is the cleaning, a deep cleaning of the property. आपके पास उसकी Google location होनी चाहिए because clients ask कि मेरे को बाहर से देखो, having the visit from inside and area कितना है. Rahul, the slide is not visible. Sorry to interrupt. Slide is not visible. The second slide. आपको नई slide show कर रहे हैं? First slide पे हैं अभी. मैं second slide show कर रहा हूँ. I'll just check. Okay. It is not visible on screen. Or if we can share a PPT towards the end. Oh no, I'll check. Visible now? No? Yeah. Yes, now it's visible. Yeah. So, you know, preparing the property, like is the cleaning and everything, to ensure the lighting and everything is fine or not. Because sometimes there are some late evening visits also. The lighting have to be good. You know, and the most important thing, आपको उस property के बारे में information सारी होनी चाहिए, because you know the buyer can ask you like anything, even if the client is through some other channel partner or something. So उनके पास questions आपसे ज़्यादा होंगे, because you know whoever is buying the property, he or she is putting his lifetime savings, और इट्स हिज ड्रीम टू बाय. उनका वो जो घर है वो उससे लेकर ड्रीम हाउस, तो उसके बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए. दैट इज आवर एक्चुअली ड्यूटी. वो हमें एक्चुअली में कोई भी चीज है तो सारे पहले ही उसको दूर करके रखना चाहिए. The third point is the creating the marketing material, which is again the photo shoot and everything. उनके कुछ ना कुछ flyers or something अगर आप बनाते हैं, अगर आपके पास already the property is vacant and very good clean property, तो आप we recently done something like we put in sun boards and put in each and every information on that sun board and kept like in the post, like if someone is having a look at the property तो वो खुद ही पढ़े उसको, photographs हैं उसमें sun board में, तो it is like more presentable that you don't have to ask each and everything क्या क्या डिटेल्स हैं आपकी प्रॉपर्टी की. तो वी हैव मेड इन अ वे, आई कैन शेयर दैट आल्सो, आई कैन शेयर विद यू आल्सो लेटर. सो दैट इज आल्सो अ वे टू गिव अ लिटिल डिफरेंट फील, जो कि नॉर्मली पीपल डोंट डू दिस. इतना सोचते नहीं कि हर चीज हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे, तो व्हेन समवन विल विजिट एट योर प्रॉपर्टी तो वो देखेगा तो इट विल बी गिव अ डिफरेंट गुड फील, अ प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली. Okay, and now is the effectiveness of the multiple channel of the marketing. You can do the social media on Facebook ads, do the this portals which we call Magic Bricks, 99 acres and all. We already have in
EXP, email email listing and email. If you send emails to your prospective buyers already आपके touch में है, and the local advertising is also one of the best. And we put sunboards on the outside the property that this floor is for sale. So that gives the one of the best result like given is the sunboard. आप sunboard बनवाइए अपना, put like for sale a little bit of information, floor for sale, third floor for sale, basement and ground floor, and put outside the main gate of the property which you are selling. वहां से आपको जो नेबरहुड से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है लोगों की, एक तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने के उससे चांस, और उसी कोई वहीं से कोई बाय द वे समवन इज लाइक दैट नेबरहुड, वो वहीं पे संडे को हैविंग अ वॉक और समथिंग, तो वो आपको देख के कॉल बैक करेंगे, एंड इफ यू आर अवेलेबल देयर यू कैन शो द प्रॉपर्टी राइट देयर, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने का वो चांसेस रहते हैं. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्लीज? Anyone? That's actually very good, Rahul. This was I actually used this feature in one of my earlier mandates in east of Clash. So Okay. वहाँ भी I put up a board outside the property, and not just for that property, I got numerous leads which were looking for a similar property, maybe in a lower budget or maybe in some other areas. So it is a very good way to generate genuine and qualified leads as well. True. Even when I was putting my first sunboard in the property in Greater Glash and in Saket, Shashank pushed me to picture also. Your own photo that gives very good appeal to the and give more value to your Professional look. Professional advertisement. look. Yeah, and you never know who calls you. Like I recently got a call from a justice. He was in High Court. Who's looking for a property in Greater Glass. So you never know. IS officer, advocates, whoever, आपके जो भी neighborhood जिसको पसंद है, वो वहाँ पे संडे को या किसी के साथ visit कर रहा है. So that is the one of the best way. You never know what kind of client you can get out of that. So you always do that. If the property is vacant, seller don't mind putting a sunboard and all, because these things whoever understand, he knows that this is the only way and the best way to do this. And एक और चीज होती है कि neighbors are the neighbors को invest करना है, but neighbor don't talk about the price and everything, so you can get the benefit of that. पता चले पड़ोसी को ही लेनी है प्रॉपर्टी, तो नेबर को ही लेनी है, तो आपको बेनिफिट हो गया, ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ी, ना ओपन हाउस करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सेल भी हो गई. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो एंगेजिंग द पोटेंशियल बायर during the showing, during the visit. So this is also a way to give a warmness to your client, to your buyer. Like if you are like traveling in the same car for the visit, you should carry water, like Bisleri or good brand of water bottles and all, to give a little personal touch. And एक आप उनसे उनको कंफर्ट के लिए whatever the properties आप उनको दिखा रहे हैं, तो उन आपकी फर्स्ट कन्वर्सेशन से आपने उनकी रिक्वायरमेंट समझी है, तो उससे आप उसके बारे में जो प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है आपके हिसाब से, जो उनके मैच करती है उनके बजट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के स्टार्टिंग में आई थिंक 2 to 3 प्रॉपर्टीज आपको वही दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं दिखाओगे तो बायर जस्ट लूज देयर इंटरेस्ट. वो तो प्रॉपर्टी दिखा नहीं रहे हो, एक्चुअली लुकिंग फॉर. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि whatever that they are like, और उनको एंड उनको कंफर्ट देना, उनका एम्बियंस, सुटेबल एम्बियंस, और जो भी मतलब उनको आपको लगता है कि एक रिक्वायरमेंट एक जिससे वो लोग कंफर्ट रहे, वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए. दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज द फीचर्स. जो भी आप प्रॉपर्टी, फोकस ऑन दी सेलिंग पॉइंट्स, जो भी, और जो सेलिंग पॉइंट्स भी आई टेल यू कि बायर खुद बताता है. आप जो प्रॉपर्टी देखेगा तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड विजिट तक पता चल जाता है कि इसको क्या एग्जैक्टली चाहिए, तो वो खुद ही बता देता है, अरे यहाँ पे पार्क होता तो और अच्छा होता, ये प्रॉपर्टी कॉर्नर होती तो अच्छा होती, यहाँ पे नेचुरल लाइट अगर ज्यादा होती प्रॉपर्टी में तो अच्छी होती. सो दीज थिंग्स आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दिस प्रॉपर्टी, अगर इनको नेचुरल लाइट ज्यादा जहाँ पे होगी प्रॉपर्टी, वो अच्छी लगेगी ना. होमवर्क तो किया ही होगा डेफिनेटली प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उनको विजिट से पहले, तो आप सीधा उसको
अगली प्रॉपर्टी बोलो सर एक काम करो, आई विल शो यू द सेम प्रॉपर्टी व्हाट यू एग्जैक्टली मेंशन, कि आपकी जो आपको अगर आपको नेचुरल लाइट पसंद है आपको वो दिखाओ. एंड वी व्हेन वी लाइक इस तरीके से अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है जैसे स्पेसिफिकली नेचुरल लाइट की हो गई, ग्रीनरी की हो गई, तो व्हाट वी डू, व्हाट आई हैव लाइक आई डू, लाइक वी डोंट इवन वी हम मतलब अपने सिक्योरिटी गार्ड या किसी को बोल देते हैं कि स्विच ऑफ द एमसीबी ऑफ द हाउस, कि उनको एक्चुअल में आप आर्टिफिशियल लाइट से उनको कोई भी एरिया को आप हाइड ना करके एक्चुअल में व्हाट इज द एक्चुअल फील ऑफ द हाउस वो एंजॉय करें. क्योंकि उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी है विद द बायर कि यार देखो मेरी एक सेकंड में रिक्वायरमेंट समझ गया ये कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट. तो दीज इज लाइक होता है ना दिल जीतने का, आपने उनका टेस्ट समझ लिया कि आपने व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. एंड ऑफ द डे अगर आपने उनका टेस्ट समझ लिया, उनकी रिक्वायरमेंट समझ लिया, सेम प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर दिया, तो आपको नेगोशिएशन, उनको कन्विंस करना और व्हाट वी कॉल उनको दिखाना कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी सेल हो, ये फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ you do these things, you know, to understand what exactly they want. Then the third point is to be knowledgeable of the neighborhood, about the property. This is the very important. You should know the schools, nearby schools. We recently have a requirement with Anubhav only, in which the lady is looking for a house in which she should have like a good neighborhood, and the most important is the schools for a girl. आसपास स्कूल अच्छे होने चाहिए, because accordingly उनको आगे एडमिशन में हेल्प करेगा. तो that is also very, so you should know all these things. And the most important is the property taxes, because it changes the knowledge उसके बारे में होनी चाहिए. कोई इंस्टेंस की यूटिलिटी कॉस्ट है, अगर प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट मतलब इवन बिल्डर फ्लोर्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है. मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए. गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस हैं, कितने स्टैम्प ड्यूटी है, ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी से पता चलता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो. अगर आपको नहीं पता होता तो आगे आपको जो आपका बायर है, यूर सेलर है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी वो एक तरह से आप पे एहसान कर रहे होंगे अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी. तो इट्स बेटर टू डू ऑल दिस होमवर्क. ये ज्यादा टाइम नहीं लेता. यू कैन इवन कॉल टू एनी ऑफ दी योर agent, EXP agent who are already in the same locality or something, to know all these things. Otherwise, Google, ChatGPT, you get each and everything these days. Just writing your requirement, what exactly you're looking for. Now is the evolving the buyer. The ask the questions. You should ask as much as questions related to his requirement, related to his family requirement, his needs, but never. एक इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, नेवर क्रॉस, यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लाइंट रिलेशनशिप. आप कभी कभी कोई ऐसा वर्ड बोल के आप पूरा का पूरा अपना हार्ड वर्क यू कैन अब जीरो हो जाएगा. अगर बाय चांस मान लिया कि तो मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है या एज अ फ्रेंड की बात करने लग जाता हूँ, नेवर डू दैट. आई विल नॉट रिकमेंड दिस थिंग टू एनीवन कि आप ज्यादा बिल्कुल क्लोज हो गए तो एक वर्ड से क्या है आपके जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल जीरो हो सकते हैं. So always remember that the buyer is buyer, seller, और relationship आपका professional relationship, आप कभी never forget that this thing. It's very important. Any question related to this slide? Anyone want to share his experience कि उनका कभी buyer के साथ ज्यादा comfortable हो, डील में कुछ इफेक्ट पड़ा हो या उनकी ब्रोकरेज पे इफेक्ट पड़ा हो? या आई एन एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी क्लाइंट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, बट देयर आर अ फ्यू क्लाइंट्स अभी रिसेंटली who actually test your patience to the maximum. So abhi I was dealing with a client of mine. He was engaged with me for the past 1.5 years. And he was so particular and very peculiar about vastu. Okay. तो मतलब उसके साथ मेरा, बिकॉज पर्सनली देखो हर एक का पर्सनल वो होता है, मैं खुद इतना वास्तु में बिलीव करने वाला नहीं, बट हाँ क्लाइंट्स की हम प्रेफरेंसेस सामने रखते हैं. तो ही वाज सो पर्टिकुलर, एंड कई बार मैं पेशेंस भी अपना होता था क्योंकि वो हर प्रॉपर्टी में जाके ना, he used to switch on his phone and he used to walk around the whole property with his phone on. ये किचन कहाँ पे है, इसका चूल्हा कहाँ पे है, इसका WC कहाँ पे है, बैक वॉल कहाँ पड़ती है. तो at a point I did not became rude with him, but I told him कि सर इससे बेटर ये रहेगा कि आप बुकिंग में लो और बुकिंग में अपने हिसाब से लेआउट बनवाओ एंड कलर थीम लो. So he did not get offended, but yeah, 1.5 years, almost 1.5 years down the line,
he did not close with me. He actually eventually bought another property, but उसके साथ properties बड़ी दिखाई, but उसकी मैं requirements meet नहीं कर पाया because of that single issue. Yeah, क्योंकि वास्तु में हाँ, I could not convince him 100% according to वास्तु. Hmm. So that was one of my experience recently. This thing happened. So मुझे भी याद है. So we were showing the property to someone in Greater Clash Part 2, GK Part 2. So the entire family came, like parents and son and daughter. उनके आए 4 लोग आए property की visit के लिए, and they came along with the measuring tape. Okay, and they measured each and every room, kitchen, washroom, each and everything they measured. और अपने वो नोट्स बनाए. कहते हैं हमने आप और मैं, मतलब कि मेरे लिए इतना फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं साइड होके आई वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर कि आप लोग जो कर रहे हो आप डू इट व्हाटएवर द वे यू वांट इट. So sometimes you have to give space to them. You don't know what exactly or from where they're coming from. And they called me after comparing whatever the property किसी और के साथ देखा होगा या कोई भी प्रॉपर्टी जो उन्होंने पहले देखी, तो सारी उन्होंने कंपैरिजन करने के बाद बोला कि हाँ ये प्रॉपर्टी बढ़िया, हमें ये वाली दिखाओ आप. So see, there are different type of people in this world, so you never know what kind of person, what kind of buyer you are going to get. But we have our job is to get the deal done. That is the priority. So we are moving to the next slide. Okay, this is the effective open house strategies. So the first point is the timing is key. So timing, no doubt, if you do the open house, so keeping the busiest hour and a limited time always give you the maximum benefit. Because आपका एक ही टाइम पे, फॉर एग्जांपल 1 to 4 is the time. Weather is good, so 1 to 4 is the good time. Otherwise evenings or early around 11 to 1 हो गया, या इवनिंग्स में आपका, मतलब डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग आपके आसपास का क्या नेबरहुड का क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनका रहना और कैसा उनका, किसी संडेज और सैटरडेज आर ऑलवेज अ गुड डे. तो आप अपना ओपन हाउस के टाइमिंग्स को सिलेक्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे विजिट में और एट द टाइम ऑफ द ओपन हाउस, उतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है टू दी प्रोस्पेक्टिव बायर्स. एक एग्जांपल के साथ इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अ क्विक वन. यू नो द ब्रांड बिग बॉय टॉयज, दे कीप कार की जो उनकी विजिट होती है, दे कीप ऑन सैटरडेज ओनली, नॉट इवन संडेज और समथिंग. सैटरडेज को रखते हैं और सिर्फ 2 hours या 1 hour का रखते हैं, और जानबूझ के रखते हैं कि, और सबको अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप इतने बजे आइए, एज लाइक अदर पर्सन इज कमिंग स्पेसिफिकली फॉर कि हमें अपॉइंटमेंट है तो हम इतने बजे ही जाएंगे. दे डोंट कॉल इट ओपन हाउस और लाइक अ शो और समथिंग. बट उसका फायदा उनको क्या होता है कि दे क्रिएट अर्जेंसी काइंड ऑफ थिंग कि अच्छा वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, अदर पर्सन इज सीम्स आल्सो इंटरेस्टेड, तो मैं जल्दी इसको लॉक करूं. सो आर property, when we have a mandate and we are doing an open house, or even we do open house for a high rise buildings and all, जो उनके ready floors होता है उसको दिखाने के लिए, तो you have to show them like उनको एक तरह से importance भी दिया by giving an appointment कि आप इतने बजे आइएगा, और come at 1, come at 2, और उसी टाइम पे 2-3 और भी आपके buyers आए होंगे. तो it gives that this property is everyone likes this property, लोगों को पसंद आ रही है, तो हो क्यों ना हम इसको अपना ड्रीम हाउस बना ले. सो यू हैव टू क्रिएट दिस टाइमिंग थिंग, which is very important. Second is the promote is in advantage. Okay, so 2 weeks before, prior, whatever the date you have fixed for the open house, 2 weeks prior you have to start the social media, WhatsApp status, WhatsApp groups, whatever your clients are, उनसे बातें आपको 2 हफ्ते पहले आपको उनको प्रिपेयर, उनको तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि आप मतलब जो मेरी है कि लाइक इफ यू आर अप्रोचिंग 100 पीपल, आप 100 पीपल से अगर आप कांटेक्ट में हो, तो एंड ऑफ द डे अराउंड 20 और समथिंग, 10 और समथिंग पीपल ओनली विजिट. So you have to approach maximum of the people, maximum of your buyers or your prospects or your co-brokers and agents nearby locally. Sometimes local agent is more active with the neighbors and also whatever the way. आपको prospective buyers को बुलाना है, by जैसे मर्जी आप उसको बुलाइए, और उसके लिए आपको होमवर्क
2 हफ्ते पहले आप स्टार्ट करेंगे, तभी 2 वीक्स पहले प्रायर आप स्टार्ट करेंगे, तभी आपको उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, अदरवाइज इट विल लाइक फुल वेस्ट ऑफ टाइम। एंड providing the information you have should have each and every information brochures, आप अगर you can make a brochures also आपके व्हाट्सएप में आजकल जो एक क्रिएटिव बनते हैं उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, वीडियोस should be handy, QR is also good option when you anyone can scan it and they are going to get the entire information in a one scan। एंड मॉर्टगेज के बारे में आपको इस प्रॉपर्टी में लोन अगर मिलना है तो हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, यू शुड नो दिस आल्सो। एंड दिस इज वर्क वेरी important, and the most important is the fourth is the follow up। follow up आपको अगर आपको जैसे बात करते करते यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पर्सन हैव शोन इंटरेस्ट, तो उसको आपको 24 आवर्स में आप उसको ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आप उनको एक थैंक्स फॉर विजिटिंग का एक मैसेज, उनको एक क्रिएटिव जरूर सेंड करो, और उनको नेक्स्ट डे आप उनको फॉलो अप करो, उनसे मिलने जाओ अगर वो बाय इंटरेस्टेड है आपसे मिलने में, तो आप उनसे जरूर मिलने जाओ या उनसे फोन पे बात करो, बिकॉज समटाइम्स पीपल थिंक कि that they are waiting for our call, okay, and we never know that who is waiting or not until unless that other person inform us। so never hesitate to call। आप कुछ भी हो, एक बार आपको फॉलो अप का मैसेज, हेलो हाय, होप यू लाइक द प्रॉपर्टी, इज देयर एनी फीडबैक, you should always ask the your buyer at the time of the open house or even on a regular visit and all। any question related to this, or someone wants to share? I just need to ask you one thing. While you organize these open houses, do you guys do the staging as well, or is it non-stage houses? Staging, I didn't get you what you Staging mean is by the that। terminology we use in foreign for the open houses, जहाँ पे interiors भी होते हैं, जैसे बेड लगा दिया, सोफा लगा दिया, ये सब चीजें। उससे क्या होता है, I mean this is just an additional thing, I think अभी इंडिया में है इसे, which last time I spoke to a few agents, including Deep as well. I recommended him as well to just be in collaboration with some of the interior की Interior companies design। यहाँ पे। So Yeah, उससे क्या होता है ना, it can bring the cost down for you guys from your commission, because first of the thing is, if somebody is coming for the open house and they like the furniture and everything, it sells, and there are high chances that these people can give you the furniture for free, or maybe they can give you some, if you're doing a very very efficient or effective open house, then maybe these people can collaborate with you and give you some of the costing as well out of if their furniture sells. I completely agree with you. And we actually, Shashank and I was actually, we planned for something for one of the property in Defcol, but currently we are not like done this. But yes, we are looking for this, looking forward for this। Yeah, because in foreign market, this is one of the way to sell the property. Because see, at the end of the day, open house का पूरा concept ही है कि लोगों को imagine करवाना कि True। how their house will look like when they're Right। gonna move in, right? This is the only reason why the pre-construction या फिर pre-launch market के अंदर भी these people have furniture, Yeah, texture everywhere, you know, yeah, because they true। make them imagine. Yeah, they do। I got your Abhi, point। this is just from my experience. I before joining EXP actually, so I went to Marbella in Gurgaon, Okay। right? And this is a property for 20 CR plus. But imagine this is all blank, और मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस पूरा खाली पड़ा हुआ है वो। So as a buyer, अगर कोई 20 करोड़ लगाना चाहता है ना, तो जब तक वो imagine ही नहीं कर सकता उस चीज को, you know, and I think that's a very good thing if EXP take this initiative. I mean to say EXP take what I mean is that all the agents in EXP, they try to do it with the networks. So So we can plan something like that। I'll tell you, just wanted to add here what you are saying. So there are like right now, no, there are two things. So one is AI staging, virtual staging, we call it. So Yeah। I think it will cost you about 50 rupees or 100 rupees per photo. You can stage it virtually, like with the help of AI. That is pretty common, just to apprehend this thing, right? Second is the physical staging, what you are talking about. So I've done that in previously when I used to host the open houses. It all depends what property you are taking it, right? So if the property is brand new, it's really presentable, then in that case, yes, definitely one should go and partner. I did it with couple of companies, really top high end
interior designers, and they are happy. And in fact, there was one property which I sold in back in 2016, about 52 odd crores. So there's a company called Otimo. So those who are not aware, they manufacture. It's an Italian brand. So they manufacture, very expensive sofas and rugs and all. So they have curated one of the room and one bedroom. And when we sold the property, the client, the buyer said, I need the furniture also. So the QR code, the contact number was there. At that time, I'm talking about almost 7, 8 years back. Wow. I think 8 years back, yeah. And the sofa, bed, everything was concluded about 75 lakh rupees. So he paid 52.75 lakh rupees. And again, because interior and I has a deal, so I told him that I will take a referral. So he gave me the referral also, some 50,000, 1 lakh rupees. I can't remember, but yes, these are some innovative idea, guys. It is very much doable. Not talk about the maximum like high expensive property. You can do it a stage of 50 lakh rupee property also. In fact, you can ask the seller that I will try to enhance the market price. Are you willing to put 50,000 rupees in furniture, like basic furniture? And by putting 50,000 rupees or 60,000 rupees basic You get furniture, it can enhance the value by 1.5 lakh rupees also. And you can say, this is a fully furnished unit. So it depends, right? You need to take a call. And as I said, it all depends how you want to present. Just to share something, if there's a plot you are marketing, you should try get in touch with some architect and ask them that these are dimension, give me elevation on this particular plot. Exactly. That's a And very, then very you can actually market it, because plot को आप क्या market करोगे? And नीचे आप लिख सकते हो, this is a artistic impression disclaimer, right? So this is a at a land level, but this is a potential development. So all these things, being a realtor, you need to be smart, then only it will happen. true. So today also I helped one of the agent, Nikhil Vora. He has recently started in Noida. He called me about 3 4 days back, and yesterday he came to office. He invited the client to office, and I sat with him in the meeting. It was his first experience. He was so concerned, कि mandate कोई नहीं देगा नोएडा के अंदर. And I think within 15 minutes, the seller was very impressed, and he said he was asking for 13 crore. I said, "Kid, I'm not going to market at 13. My price should be 11. If you want to work with us, 11 crore, 2% GST, take it or leave it." So आज उसका जब राहुल प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उनका कॉल आया दैट क्लाइंट हैज सेट 12 करोड़ पे शुरू करते हैं, अगर नहीं होता है तो वी कैन मार्केट इट 11.5 करोड़. that's So interesting. guys, these are some things which comes with the practice. You need to be 100% sure what you are selling, and if your services are up to the mark, no one is going to argue and question you. Completely agree with you. So every day I'm sharing these examples, चाहे वो बैंगलोर में चाहे बॉम्बे में, अगर मैं कर सकता हूँ, राहुल कर सकता है, एक नया बच्चा कर सकता है, तो आई थिंक एवरीवन कैन डू इट. एक्चुअली नंबर ऑफ जितना आप ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ जितना आपकी ज्यादा वो होंगी, एक तो आपको उससे यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर कि वो कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, एंड उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे टू गेट द मैंडेट और फॉर द सेल. एवरीथिंग लाइज ऑन कितने को आपने टच किया, कितनों को आपने पुश किया, आपने जो भी वट एवर यू आर टेकिंग मैंडेट फॉर अ सेल और फॉर बाइंग वट एवर. तो जितने ज्यादा लोग जितनी ज्यादा मीटिंग्स करेंगे लोगों से, आपको उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. मीटिंग्स में अगेन व्हाट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, ask questions, even it's buyer seller, why they want to sell, why they want to, what they want to do with the money once they get. प्राइस अगर कोई स्पेसिफिक वो उस पे स्टिफ है तो क्यों, वाई दे आर थिंकिंग इन दैट वे, जब वो आपकी मार्केट का पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद भी आपकी नहीं सुन रहे, तो यू हैव टू लिसन हिम कि वो वाई ही और शी इज सेइंग एंड स्टिक ऑन दैट थिंग. और अपनी जब आप वैल्यू उस पे आप करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे कि नहीं, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि इतने प्राइस पे नहीं जाएगा, इस प्राइस पे जाएगा, तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाई यू आर चार्जिंग द लाइक योर फीस, इज इट राइट और नॉट, वो उसको खुद ही उनको मिल जाएगा, आपको बताना और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इज द turning the leads into the sales, the closing technique. So qualified leads is the first, the finance जिनके पास ready हैं और जिनको property आपकी पसंद आई है और आपने उनकी requirement को पूरा match कर दिया है. So stick to them, do the follow-ups, and don't leave them like hanging. Always reply them on time. These things counts a lot. Whenever you are meeting with them,
you have to be reach on time, and all these things matters a lot, and explains why they should go with you, why not with any other local consultant, why exp agent. So you have to follow these things. The second point is the highlighting the benefits, focus on the unique property features, why it's add the value. It's not about only the money. घर से ज्यादा पैसे से ज्यादा जब इंसान एक घर अपना परचेज करता है नए या कुछ बेचना चाहता है, उसके पीछे कोई ना कोई उनका एक रीजन होता है कि भाई हमें बड़ा घर लेना है, या मैं फैमिली के साथ शिफ्ट करना चाहता हूँ, इट्स माई फर्स्ट हाउस, और इट्स माई आई एम हाउस बाइंग हाउस फॉर फॉर माई रेंटल इनकम और समथिंग लाइक दैट. सो उस चीज को अंडरस्टैंड करो, उस चीज को सॉल्व करके व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, अगर आप वो डिलीवर करते हो तो यू आर एडिंग वैल्यू to your work, value to their life. So it will give you benefit, and comfort with your buyer, with your seller. Always remember, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में you should always know, आपको पता होना चाहिए. Third is the urgency. Creating urgency is a very technical thing. आपको टाइम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सी इट्स इन द प्रॉपर्टीज इन ओपन मार्केट, इट कैन गो like anyone can buy it, it's not going to wait for you only. तो बट इस तरीके से पोलाइटली तरीके से बोलना है कि उसको ये ना लगे कि ट्रस्ट, तो यू हैव टू डू इन अ बैलेंस्ड वे. बैलेंस जो है आपको खुद उसकी लिमिट्स और उसको खुद आपको जब अपने बायर या सेलर के साथ उस चीज को आपको खुद वो करना. स्मॉल एग्जांपल विद दिस अर्जेंसी थिंग, द रिसेंटली द प्रॉपर्टी वी हैव लॉग्ड, लाइक वी हैव सोल्ड इज विद द प्राइस ऑफ 50 lakh more what I was thinking कि इसको हम सेल कर देते हैं at the time of the birthdays Diwali. So definitely time जरूर लगा, it was like a 2.5 months period, but कभी कभी जो वेट होती है वो बेनिफिट भी कराती है. So you never know, थोड़ा सा पेशेंट होके चीजों को अंडरस्टैंड करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा विद योर बायर एंड सेलर. फोर्थ पॉइंट इज राहुल, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था अभी, जैसे आप ही बता रहे थे हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी विदाउट बीइंग पुशी. आपने शायद आंसर भी किया, बट इसका थोड़ा और इलैबोरेट करके बताएंगे. एक थिन लाइन होती है क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड बीइंग पुशी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन. See, what according to my experience, whenever I have done this, कि जल्दी ले लो, आपको समझ नहीं रहे हो, like that, तो ये हमेशा नेगेटिव उसमें जाता है, वो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है. So always I do one thing, I ask them कि see, it's an open market, आप अगर नहीं लोगे तो कोई ना कोई और लेगा. अगर आपको बाय चांस पसंद है तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स, टाइटल जरूर चेक करना चाहिए. आप एक टोकन देके इस चीज को रोको, अदरवाइज वो फिर से ओपन मार्केट में तो है कोई और ले लेगा. तो इस तरीके से बोलना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग. मैं थोड़ा सा पर्सनल टच देके एज अ फैमिली और उस तरीके से मैं डील करना पसंद करता हूँ. तो अगर मैं उनको इस तरीके से बोल दूंगा कि नहीं निकल जाएगी, कोई और ले लेगा, लाइक अ टिपिकल काइंड ऑफ ब्रोकर व्हाट दे डू, तो वो मुझसे उनके फेस पे ना एक्सप्रेशन ऐसा जाता है कि अब तो ये बेचने लग गया, अब तो ये फैमिली हो कितना या घर की तरह बात. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एवरीवन हैव्स देयर ओन वे. जैसे अबाउट व्हेन आई सीन शशांक सेज इन वेरी प्रोफेशनल वे, बट आई ट्राई टू कॉपी हिम, बट वो कॉपी होता नहीं है. और आई थिंक मुझे कोई मेरे तरीके से कोई कॉपी करना चाहेगा तो वो नहीं होगा. सो एवरीवन हैव हिज ओन वे ऑफ डीलिंग एंड जैसे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड ब्रोकर्स जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ट्रेडिशनली प्रैक्टिस चलती थी कि डमी विजिट्स होती थी या डमी क्लाइंट्स होते थे सामने, ठीक है, एक काउंटर क्लाइंट्स के काउंटर, सर एक ऑफर मेरे पास एक और विजिट आई हुई है. तो पहले ब्रोकर्स क्या थे, हमने भी इनिशियल फेजेस में करा हुआ, ऐसे विजिट आती थी तो साथ में किसी और को, ब्रोकर को या किसी को फैमिली को बुला लेते थे, हाँ जी देखो ये दूसरी क्लाइंट भी आया हुआ विजिट करने के लिए, तो उसमें अर्जेंसी क्रिएट होती थी. तो डू दीज ट्रिक्स स्टिल मैटर और स्टिल दे आर एक्टिव इन द मार्केट? इट स्टिल मैटर्स, पीपल डू दिस. आप देखिए एक और क्लाइंट और एक और फैमिली को पेश सामने प्रेजेंट करना, इट्स आई हैव डन दैट और मेरे को सक्सेस भी मिली उसमें, इसलिए मैं पूछ रहा था. वर्क्स फॉर यू, होता है वर्क. एज आई मेंशन्ड, एज आई टोल्ड यू, if it suits you, if you have done and it given you a result, then why not? Because what मेरे केस में what actually happened कि मैंने उनको बोला कि कोई और ले लेगा, कहते भाई लेने दे, ले रहा तो ऐसा थोड़ा होता है.
तू मतलब हमारी Mhm. साइड से उसकी साइड से, तो दिस काइंड ऑफ थिंग you have that's why I mentioned there's a thin layer you have to you know be Okay. very calculative what you say Okay. to your buyer, to Right. your seller. Handle objections कि उनका कोई कंसर्न प्रोफेशनली एड्रेस आपको करना चाहिए, एंड क्या कहते हैं, कोई प्रॉम्प्ट, as we said कि जो आपको whatever you have to handle, it have to be handle, and it concern को professionally you have to handle it. Fifth is the ask for the sale. Guide towards the community. Ask for the sales is the again जो आप कोई भी आपकी चीज है क्लोजिंग के टाइम पे उसको लीड से उसको सेल में जो कन्वर्ट करने का जो है वो तभी है जब उसको आप क्लोज करते हो। अगर आप उसको क्लोज ही नहीं हुई तो आपकी वो लीड ही है, आपकी विजिट और आपकी जो एफर्ट्स हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है होएगा। तो क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हमारी फीस नहीं मिलेगी, so it's very important. Moving to the next slide is the common any question related to the last slide? Okay, so we are moving to the common mistakes that Yeah, we Rahul, should. I think we can quickly finish Yeah, this yeah, done, because done, we are done. already over time, and I know it's very late. Very interesting session though. It's already 30. I can see a lot of people dropped. Yeah, So yeah, I can see. So these are the common mistakes that we should avoid: is the overlooking of first impression. Second is the failing to build rapport. As I mentioned, you have to build a rapport with your buyer, with your seller. You don't have to be pushy. You have to make a comfort level. You have to understand the requirement. Third is the non-follow. This is the most, you have always do the follow, or normally maximum of the people in our line and in our company also, I would say कि हम follow-ups में मार खा जाते हैं. Follow-ups is the one of the most important thing. Fourth is the neglecting the buyer concern. This is the again which I have mentioned like number of times today कि उनका concern, उनकी requirement को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें. You should always listen your buyer what they want and why they want. Now is the that we are the key tools is the open house and showing the properties, and success factors the to understand your client's requirement and always be professional, and be a good listener and ask questions as much you can to understand their requirement, and closing the deal. Closing the deal is the our main priority. Thank you, everyone. You please tell me if you have any questions. Hi Rahul. Yeah. Hi. How are you? I have a question for you. Like when you're taking this mandate, what is the pitch you generally have? Like how do you convince them? What is the benefit that the seller of the property gets in giving a mandate? Because as you told, the price that he gets is generally what the market price is. If we expect him to give 10-20% extra, that Mhm. may not work, no? So what is the benefit the seller gets? So the benefit the seller gets is which I normally pitch, and by which I'm getting the mandate is I tell them that see, you are already engaged in some of your own activity. You can't do the marketing. You can't stand there and explain the entire property title about the property to the prospective buyer, to the other agent. Okay, so I will be there to represent you. I am there to represent you. You focus on your work, and I will do my job in which I am the best. Okay. So whatever the first meeting is there, कोई भी मतलब it's you have to show that I am there to do the first meeting, to do the filter of the buyer. I will select if this is the buyer. He have the money. I have checked his profile. He wants the property. He already shown to the family. There will be no any time waste of your busy schedule. So you don't have to waste your time in doing all the activities which is required to sell your property. And one more example which I give them is the why the builder gets more price, not the end user, because he have a professional team. Okay, and you are not the professional in this business, so it's better to hire a professional, and we will manage your property. So Rahul, I think ये भी एक अच्छा point है, but we have a short time. But let me just demonstrate all everyone like how the pitch should be. So let's do a small kind of a role play. Let's say you are the owner
ठीक है, or I can be a owner. You can ask me number of questions as per your. Yes. So let's say, this, I'm just giving you a perspective. So you can be a owner and I am your agent, right? So this is a kind of call, which is a kind of introductory call. Okay. So let's start. Okay. Okay. This is a property located in XYZ. Vasant Vihar ले लेते हैं. ठीक है. Done, Shashank. Okay. Our favorite colony. नहीं, मैं डिफेंस कॉलोनी भी ले सकता हूँ वैसे. वसंत विहार ले लेते हैं. Okay. So hi Rahul, how are you? Hi, Shashank. I'm good. How are you doing? Good, good, good. Acha, Rahul ji, I was going through, some of the properties which is available in Vasant Vihar, and I found that, you are also in market. You are looking to sell or do something about your property. Is that true? Yeah, actually, we are looking to dispose of and to do something with our property. Okay. And Rahul ji, कितने time से है ये property market में, and like since how you are trying to sell it? How We are long? just planning to, we have just spoken to 2, 3 local agents and all. That's what is going on currently. Sure. And if you're comfortable sharing the name of these agents, because I'm quite active in this market, so maybe I can help you out. Like, who's the right person to go with? So there's one like in C block market, you must heard Bobby Sony is there, and one more Tara Estate is there. They are handling. Yeah, I think Tara State is a old one. They are having 30 plus experience. Yeah. They are old, people who are stays in Vasant Vihar itself. Yeah, he Okay. joins me for a drink also at club. He meets me at club also. Oh, That's nice. So just to give you a little, background on myself, sir, it's been, almost 15 years I'm working in this market and quite prominently looking after the South Delhi market. And these are a couple of neighborhoods like Vasant Vihar, Defense Colony, Panchil Park, right? So these are some of my favorite locations because these are category A, and accept Defense Colony because it's a category B, but the prices are in the same range. Majority of my clientele which I prefer working with is, these are the professional CXOs, company owners. There are some, bureaucrats also I have dealt in past. And in my journey, I must have sold, in these localities, about 50 plus houses, right? Talking about my company, so I represent a company named EXP Reality. So it's a Nasdaq listed company. We have a presence in about 27 countries, and with agent base of 86,000 agents worldwide. And it's been 4.5 years. We are helping clients in India, right, and selling properties across the major cities of the country. So there are numerous of transactions which we are doing on a year-on-year basis, and we have a team of professional like me who supports me in terms of marketing these properties. okay. So my request to you, is it possible that I can come and meet you sometime soon, and we can take this discussion ahead, or what we can do, maybe you can ask some questions if you have some doubt. I'm happy to take it on a call. So how you want to do it? Like, do you have a buyer or something, or how you do it normally? See, I'll tell you right now, we are running with couple of buyers, not exactly for Vasant Vihar, but I might shift these buyers to Vasant Vihar depending if I have your property with me, because I focus my energy on the properties which I market or my team market, right? So as I said, we work very professionally. We are a Nasdaq listed company, so we have some terms which I wanted to discuss ahead before taking it forward. And just to give you an idea, we work with a focus. On an average per agent, we are selling almost 5 to 7 properties in a year. And these are, I'm talking about a ticket size of 20 to 50 crores. Right. Yes, we can meet. Also, sorry guys, I mean, for Rahul, I got a call in between, as you like George asking that how you cope up with that, getting the mandate. I mean, that's a great thing which you have mentioned, I think. But there's a addition from my side, maybe that can help. So usually if somebody is asking me for why should they give me exclusive mandate, or what is the benefit of that, with my experience, when the property is available and open in the market, it loses the value. True. Right, because there are 10 different agents who are quoting a different rates to the clients. Right. But when somebody, only one person is controlling the property, then it retains the value, and also it can go appreciated pricing as well. Right. So this is something which I like to explain to my clients as well.
And we used to explain these things in a foreign market too, because no matter it's a foreign market, again you have to explain these things to get the mandate done. I also used these words like number of time, but yes, you are right. Actually, I missed it. But this is a very important because if you go to local market, people spoil normally the pricing and all. ये तो बिक Exactly. नहीं रहा, ये तो इतना price होना चाहिए and all. So if there's only one agent, then yes, he can control the price, which we recently done in GK, as I mentioned you. That I was also getting number of offers. I was also very morally down कि नहीं इतना ही price होएगा and all. But end of the day, we actually reached the actual with the listing price. Because with my experience in the foreign, like for example over here in the pre-launch market, हर किसी के पास access है उस inventory की. But in foreign market, if we are talking about USA and Canada, there is a one sales agency who take care of all the inventory on behalf of a developer. So they actually control the pricing. Okay. So I Correct. think that So works. I think यहाँ पे भी होता है तरुण, हाँ ऐसा नहीं है. So this is what project mandate is called about, है ना? So होता है यहाँ पे भी, but यार कि काफी बड़े players हैं उस game में ना. So Right. guys, I think you will get an idea. अभी राहुल और मैंने एक छोटा सा एक script role play किया था over the call, and I think you get the kind of करनी चाहिए. You have to be confident. You have to be a little calm. You should know that you are talking about yourself, your company. Forget about what is happening in the market. Try to be a little bit a witty or humor, so that you can break the ice. The other person will also should feel comfortable about it. And usually I am telling you 99% of the time, this is the pitch of owners, like Rahul has acted, and this is the similar kind of pitch of mine if I am talking. So you need to practice these things, show that you are a professional. If the client is taking or speaking to you more than 2 minutes, then the chances that he will speak to you for 10 more minutes, right? So या तो 30 सेकंड 1 मिनट में फोन काट देगा बोल के मैं बिजी, और नहीं तो फिर वो आपसे आराम से 10 15 20 मिनट बात करेगा. And this May is I happening. ask a question, Shashank? To interrupt, may I ask a question? अच्छा, एक मैं अगर particular example अगर आपसे discuss करना चाहूँ, there's a particular property in गुड़गांव that I'm eyeing on, and वो owner ने अभी time नहीं दिया है, एक दो बार उनसे मेरी बात हुई है, and that property ticket price is somewhere between the asking price is somewhere around 26 or 27 CR, but actual price of that property, the market price is somewhere around 22 to 23 CR. तो अभी टाइम नहीं दिया है ओनर ने, बट आई एम पर्टिकुलरली ट्राइंग टू गेट अ मैंडेट फॉर दैट प्रॉपर्टी. मेरी शायद तरुण से भी पहले एक बारी बात हुई थी. तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज स्टक इन द मार्केट फॉर द पास्ट आई थिंक 2 or 3 years, और वो बिकिनिया एंड इट इज पता है ना कि क्या हो रहा है. जैसे आप ही बोलो 25-26 करोड़ ओनर मांग रहे हैं, एंड मार्केट इज 20 to 23. तो आई थिंक देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 10%. दैट इज वन पॉइंट व्हाई द प्रॉपर्टी इज इन मार्केट. ठीक है. दूसरा, अगर आप ऐसे क्लाइंट के पास जाते हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू एंडेड अप लूजिंग योर टाइम. पता है वो ओवर प्राइस्ड है, तो यू शुड नॉट टेक दैट मैंडेट. दैट्स माय टेक. You should very clearly tell them, boss, that property is not selling because you are not realistic. You are not a motivated seller. You are just or try to convince them that this is the realistic picture. See, don't convince. Don't be like begging in front of client. You have to tell them the right thing. Be honest, be professional. And this is what professionals. So अभी राहुल ने बोला ना कि शशांक has their own way. So you should get your own way. अगर client गलत बोल रहा है तो you should tell on his face that this is not right. ओके. बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी, आप उनको बड़े प्यार से बोलता है, वो नहीं समझ रहा है, आप उनको बड़े प्यार से बोल सकते हो, सर आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम. यू हैव वेटेड फॉर 5 years 7 years 10 years with this property. You should wait more 2 or maybe 3 more years. Maybe you will get this price. Yeah, to get this price. Okay. So I think you are not arrived there. Seller. Yeah, you're not the. You don't want like your money. Like अभी आपको ऐसी urgency नहीं है सेल का. And you're not motivated enough to sell it right now. So कुछ होते हैं ऐसे, राहुल को पता है. There are examples. There are transactions offer for 80 when our owner was asking 85. Then we got the 85 offer. Then she started asking 100. When we got the 103 offer, she started asking 120 crore. So exactly happens. Yeah, it happens. So this is again. So उसको कोई बात नहीं, आप time waste करो. जब हमें बता देना, हम आपके. Yeah, no, we take a sweet box to you. There was a property in DLF. I was having a discussion with the owner. He started 9.5 CR. और अभी लास्ट मेरी मैंडेटरी अभी बात हुई, सर एक बार प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, कहते नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग 11.5 CR फॉर द सेम प्रॉपर्टी, और ये 6 महीने की बात है. तो ऐसी प्रॉपर्टी को ठीक है, इट्स बेटर टू लेट इट गो.
ठीक है, if they're not accepting, तो बड़ा सिंपल सी तो बात है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम इज द हमारा एसेंस टाइम ऑफ, वेस्ट होता है। हाँ। सो अगर आप ओवर प्राइस पे मैंडेट ले भी लो, सो हाँ। यू रियली नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू परचेज, कभी भी कोई भी मैंडेट लो, मैं सिंपल से आपको एक अपना ना थंब इंप्रेशन दे रहा हूँ, एक थंब रूल दे रहा हूँ। अगर उस प्राइस पे आप वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहोगे तो ही उस प्राइस पे लिस्टिंग लो। इफ यू फील दैट प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद लेता, देन ओनली यू शुड be able to sell it or take the mandate at that price. It is a simple mathematics. अगर आपको लगता है उससे थोड़ा 5-7% ऊपर है, मार्केट में प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप उसकी कॉल ले सकते हो, बट यू हैव टू टेल द क्लाइंट वेरी क्विकली. So I think these are some great fundamentals, and thank you, Rahul, for sharing this. Hello, Shashank. How do you ascertain that what is the price of the property? Because normally this इसे तो happens. मार्केट नॉलेज बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए उस मार्केट में कितनी प्रॉपर्टी बिक रही है, क्या प्राइस पे बिक रही है. ये आपका काम है एज अ रियल्टर. That's the homework you have to do actually. यू हैव टू डू. अगर नहीं निकाल सकते तो सिंपल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, वहां जाके पूछ लो भाई इस प्रॉपर्टी में, वहां पे इस फलाने मोहल्ले में, इस फलाने लोकेलिटी में, इस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉपर्टी किस प्राइस पे रजिस्टर हो रही है. लास्ट ट्रांजैक्शन कितने कितने प्राइसेस पे हुई हैं. बस चाय पानी का खर्चा दो, सारी चीजें डिटेल निकल जाती हैं. सो आई एम टेलिंग यू, ये एज अ रियल्टर आपने काम करना पड़ेगा, एज अ होमवर्क करना. जीपीटी गूगल पे जाके देख सकते हो लिस्टेड किस प्राइस पे है, टेक एन एवरेज ऑफ दिस, एस्टिमेशन, ब्रोकरों से फोन करो. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज. Everything, housing, magic brick, everything is online these days. आप जानना चाहे 10 क्लिक्स में आपको पता चल जाएगी इन्फॉर्मेशन. बट नॉर्मली जब हम प्राइस बताते हैं उसको, तो हमेशा जो ओनर है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऊपर ही बता रहा होता है. देखो आपको मैं बताता हूँ, आपके लिए एक आंसर देता हूँ. ये ना ह्यूमन बिहेवियर है. जब आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, उसको लगता है मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, मैं महंगी खरीद रहा हूँ. बट वो खरीद लेता है और या जब वो बेच देता है, तो दोनों को बहुत कंफर्ट होता है. कंफर्ट दिलाने का काम एज अ ब्रोकर आपका है. एंड दिस विल बी ऑलवेज देयर. ये तो डिफरेंस हमेशा, सेलर हमेशा उसको ज्यादा चाहिए, बायर को हमेशा में कम में चाहिए. इट इज ऑलवेज देयर, हमेशा रहेगा. ओके, थैंक यू. एंड राहुल knows this. आई थिंक बायर सेलर की जो मीटिंग कराते हो ना, आपको मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ द टाइम वो ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है. ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. You बीइंग अ ब्रोकर यू नीड टू बी टेक एवरीथिंग इन एडवांस. सारी चीज फ्रीज करो. राहुल को आई थिंक पता है, and he has seen it. Deep, some of you also have experience Deep के साथ भी. We can take everything in our hand and then we close the transaction. तब आप broker to कहलाओगे. meet, like normally what the I've seen people who do कि भाई मिलवा दो. No, आप खुद मिलो. You have to meet yourself, buyer separately, seller separately. जो भी उनके क्वेश्चन हैं कुछ हैं, be prepared कि जब आप मीटिंग में बैठो आपका हर चीज का आंसर होना चाहिए. और उसको जितना कम डिफरेंस होएगा, गैप होएगा, तभी डील लॉक हो जाएगी. अदरवाइज तो जितना मर्जी बिठाते रहो, कोई फायदा नहीं. तो आपस में लड़ पड़ते, गोलियां चल जाती हैं. तो यू मीन टू से दैट एडवांस हम लोगों को पिकअप कर लेना चाहिए एंड गिव इट टू द. बिल्कुल सर, चेक, नोट एडवांस. Yeah, कैश if you हमेशा can, चेक. why not? यस. ओके. सो देखो, आपको मैं, राहुल ने आई थिंक देखा है, दीप ने भी देखा है. सो आई नेवर आस्क बायर सेलर टू मीट. आई इनवाइट देम टू मीट जस्ट टू साइन द फॉर्मेलिटीज. एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बायर को ये नहीं फील होना चाहिए आप सेलर के फेवर, बायर के फेवर में. अगर ये हल्का सा भी उनको फील हो गया तो वो आपको छोड़ देंगे. ठीक है, वो डील नहीं है. एक्चुअली आपको उनको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि आप मिलोगे तो वो प्राइस ज्यादा करेगा. लेट मी नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ यू. सो यू हैव टू डू ऑल दीज. आपको एक्सपीरियंस हो, पता चलेगा. But मजा आया राहुल. I think thank you so much for your time, guys. I hope you also enjoyed the session. These are real time knowledge which Rahul has shared. मैं राहुल को जानता हूँ पिछले I think 10-12 साल से, and I was the one who pushed him to join EXP, and he was also working somehow very smartly but traditional way of dealing. जो mandate वाली बात थी, तो he always believed कि mandate नहीं देते हैं. तो then I think it took me a lot of time just to convince him, जैसे अभी आपके साथ डिस्कशन हो रहा है. सो मैंडेट लेके मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. देखो, मैंडेट लेने के लिए मैं क्यों पुश करता हूँ सेकेंडरी मार्केट में. अगर आपके पास मैंडेट है ना, तो आपका 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन डन हो गया है. ठीक है, 90% ऑफ द चांस कि आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे. तो अगर आपको 10 प्रॉपर्टीज पे जाके डिस्कशन करना पड़े, उसमें से एक मैंडेट मिल जाता है, तो चांसेस आर कि आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे. एंड राहुल कैन टेल यू, आई थिंक 4 साल के अंदर जितने मैंडेट लिए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो राहुल ने नहीं बेचा. Everything got sold. Mandate has to be a closed mandate, Shashank जी. Close mandate, exclusive mandate, yes. एक्सक्लूसिव मैंडेट की बात कर रहा हूँ. तो राहुल को ही मैं बता रहा हूँ, आपकी सारी ट्रांजैक्शन हुई है राहुल. आई डोंट थिंक कोई भी बचा है. नहीं, सारी always like with the grace of God everything. but आपको मैं एक चीज, it little like I have sold, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए नहीं था मैंडेट्स के साथ, क्योंकि मैं I don't used to think it is good thing.
बिकॉज अदर कंपनीज जब लेती थी जैसे सीवी रिचर या अदर वॉट एवर अदर ब्रांड्स, वो बेच नहीं पाती थी और मैं जाके उनकी प्रॉपर्टी सेल करता था। सो व्हेन एक्चुअली शशांक का जो मैंडेट होता है, शशांक छोड़ता नहीं था साउथ दिल्ली के, बिकॉज व्हेन वी आई डोंट नहीं था, जब मैं मिला नहीं था। तो दिस इज द थिंग, यू नो, तो एक्सपीरियंस आपको बेचना अगर आता है तो मैंडेट इज द बेस्ट थिंग। अगर आपका 90% काम वन एंड इज डन, कि आपको इतना तो होना है। सो गाइज, आपके पास एक अच्छी खासी पावरफुल ब्रांड है, आपके पास सारे टूल्स हैं, यूज करो उन्हें, डिफरेंशिएट योरसेल्फ, पोजीशन योरसेल्फ, वर्क स्मार्टली, यू नीड टू ट्रस्ट व्हाट इज सेइंग टू यू। जो भी आप लर्न करने के लिए सबसे पहले डीलर्न होता है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके प्रैक्टिसेस है, जिनके सर्कल ऐसे हैं, ब्रोकर्स बात ऐसी करते हैं, सुनना ही नहीं है सर, देन ओनली विल बी एंडेड अप मेकिंग मनी। So this is my like suggestion to you, again tip to you, start working, taking mandates। 4 मैंडेट लोगे, फोकस हो जाएगा, चारों के चारों बेच दोगे, नथिंग लाइक इट, 2 भी बेच दोगे, एटलीस्ट 2 ट्रांजेक्शन तो होंगी। सो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, रिपीट, द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो बहुत बहुत सरल तरीका है बिजनेस करने का, बट यू हैव टू बी, अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट होना पड़ेगा। नो मैटर वहाँ पे चाहे इंटरेस्ट किसी का भी जा रहा है, अगर आपको सही या गलत में डेफिनेशन आपने ही बनानी है। क्लाइंट के लिए वही प्रॉपर्टीज देखो बायर के पर्सपेक्टिव से, या मैंडेट उसी प्राइस पे लो जो आपको लगता है कि आप बेच पाओगे या आप खरीदोगे उस प्राइस पे, देन ओनली द चांसेस इज कि वो आप बेच पाओगे। बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ बायर, बट मोटिवेटेड सेलर्स जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं। सो राहुल मस्ट हैव सोल्ड आई थिंक मोर देन, राहुल कितनी प्रॉपर्टी बेच ली होंगी आपने अपने लाइफ टाइम में, जस्ट फॉर एवरीवन्स नॉलेज? लाइफ टाइम में तो बहुत अकाउंट नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। मैं मोर देन आई थिंक 100 तो बेच ही लो, हंड्रेड्स ऊपर होंगे, crores and all, if we count everything, 100 deals। करेक्ट। सो आप सोचो, एंड राहुल इज ऑल्सो बिलीविंग इन मैंडेट्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट, एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट ईयर अगर राहुल थोड़ा फोकस करके करे ना, आई स्टिल फील ही डजंट बोदर मच अबाउट इट, बट ही हैज अ पोटेंशियल। अगर ये सबसे बात करे तो आई थिंक ही कैन इजीली टेक 4-5 मैंडेट। बट मैंडेट लेना मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट फनी। चलो, थैंक यू सो मच राहुल फॉर योर टाइम, आई लव द सेशन, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।